Assalamu alaikum, welcome to my channel Mosma Batul. So here we go, this is another informative video for you, because in this video I'll tell you the paper pattern of BSc part 1 for UOG students, because after completing your intermediate there is a huge difference in syllabus of inter and graduation. So this is compulsory to know about the paper pattern. Students, every university has different paper pattern. So this paper pattern is specifically for UOG, University of Gujarat, BSc Part 1. I hope you will learn something from this. In this paper pattern, along the question sequence, I'll discuss mark scheme and choice criteria as well, as so that you can prepare your exam well according to the choice criteria or mark scheme. So start करते हैं. BSc Part 1 का इंग्लिश का पेपर बहुत शॉर्ट सा पेपर होता है, जस्ट 50 मार्क्स का पेपर होता है, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर्स. बिकॉज ये पेपर शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स जो कि 100 मार्क्स के होते हैं. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दिस टाइम ड्यूरेशन इज गिवन टू अटेम्प्ट द होल पेपर. सो दिस क्वेश्चन पेपर BSc और ADS इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स, सेक्शन A और सेक्शन B. इन सेक्शन A और सेक्शन B व्हाट द थिंग्स आर देयर कि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या चीज़ें आएंगी. तो आपका जो सिलेबस का पार्ट है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पेपर कम फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन. Now let's go towards the paper pattern. So in section A there are 3 questions. Question number 1 is about the Pressy. Question number 1 will be like this: read the following passage and answer the given questions. आपको एक पैसेज गिवन होगा, आपने उसकी प्रेसी बनानी होती है और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं. ये पैराग्राफ आपको गिवन होता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं. All these 4 questions have 2 marks, and last one question which is of Pressy making, this question has 7 marks. So in this way this question of 15 marks. Next question which is about report writing. 2 reports are given in which you have to attempt any one report and you will attain 10 marks in this way. So 2 reports में से आपने कोई एक रिपोर्ट लिखनी है और आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है अबाउट preposition. आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी विद डैशेस and you are directed to fill the blanks with proper prepositions. So these are the 7 or 8 statements. You have to attempt any 5 and each statement has 1 mark. So there section A ends. Now come to the section B. So in section B there are the 5 questions in which you have to attempt any 3 questions, and mark scheme will be like this: 7, 7 and 6. First 2 questions will carry 7 marks and last question will carry 6 marks. This sequence will be applied during the checking. During writing it's up to you कि which question you write firstly and which question you write later. आपको चाहिए कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है ताकि आप 7 मार्क्स एक्वायर कर सकें. ओके, एंड लास्ट में जो क्योंकि टाइम भी कम होता है एंड आप लास्ट में वो क्वेश्चन करें क्योंकि उसके मार्क्स कम होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करें विच अबाउट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन यू नो बेटर. So these are the 5 questions. You have to attempt any 3 questions. Where from these questions come? These all questions come from chapters. You have 10 chapters in your textbook. So उन्हीं 10 chapters में से ये 5 question आते हैं जिसमें से आपने 3 questions attempt करने होते हैं. So this is your paper 3rd year. I'm again repeating the mark scheme. Question number 1, this is the Pressy and this have 15 marks. Question number 2, report writing will carry 10 marks. Question number 3, preposition 5 marks, and then section B 3 questions from these questions will carry 20 marks, 7, 7 and 6. So I hope कि आपको ये पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. And after knowing this mark scheme and choice criteria, you should have know better that how you should attempt your paper and first of all how to prepare your exam. So I hope this video will be useful for you. If you think this video is good for you or informative for you, so share it with your friends and the students who have no any idea about the paper pattern or anything about 3rd year BSc Part 1 exam. So must share this video with all of them so that they can get the idea about the coming exam. I tried my best to elaborate all the details. So now if you think this video is informative, so must like it and don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.